and globalization changes that characterize today's competitive landscape, external environmental analysis should be treated as continuous process. Okay, so each company must continue to analyze the external environment to identify and deal with new threats and opportunities. This means that given the technologies and globalization changes that characterize today's competitive landscape, external environmental analysis should be treated as continuous process. There are four primary components of external analysis. What are the four? Number one is scanning, monitoring, forecasting, assessing. These are the four important primary components. You can say it is a primary component of external analysis. Now, what is scanning? The scanning entitled the study of all segments in the general environment. In general environment, in potential changes, detect changes that are already underway, most information, data, observation, ambiguous situations, incomplete tasks. So the first one is scanning. From the name itself, you can identify that before establishing any new company or new industry in any areas or in any bit, number one, scanning is important. What is the meaning of scanning? The whole environmental situation, the whole environmental situation or the whole environmental things you need to be calculated. What is that? First of all, you need to test the soil. First of all, then after you look at the transportation, look after the environment, look after the greeneries, look after the waste product, where to be dumped the waste product, each and everything. Okay, you need to analyze, you need to make a report, you need to do a survey, and on the basis of that particular report and survey, if the things after scanning all this what you can say exclusive processes, after passing through exclusive processes, if you find that this particular place is an ideal area for establishing any company, for establishing any industry, then only finalize by any higher authorities that yes, now you can establish the company. Okay, this is the first criteria, scanning. Okay, now the next one is monitoring. Monitoring represents a process whereby strategists observe environmental changes to see if, in fact, an important trend begins to emerge. The critical use of in monitoring is that strategists be able to detect the meaning from the data and information collected during the scanning process. By continuously monitoring emerging trends in the political, regulatory, economic, and technological environments, companies should ensure that they are not caught off guard by material changes in the competitive landscape. After the scanning process, the next process is monitoring. Whatever you have detected, the simple or whatever you have detected in the scanning, now you need to monitor those areas where you feel that these areas need to be observed, need to be make more strategies on this particular area. Okay, so this process is called monitoring. Okay, now for example, any company executive higher authorities want to open an outlet, suppose in the Sakchi area. Okay, in the Sakchi area, it is an ideal place for any business to be set up, to get set. Okay, it is a very ideal place. Okay, so now suppose, for example, take an example of a Zomato, or take an example of Aminia biryani, which is a very famous in Jharkhand. Okay, not in Jharkhand, in abroad also. Aminia biryani is a very famous place. Now, Aminia biryani restaurant or Aminia biryani center have its exclusive centers in where you can say big states, suppose big cities, suppose Ranchi, Jamshedpur, in the eastern part, Calcutta regions, in the western, all over India, maximum you can find. In the airport areas, a lot of this
related, a lot of outlets are there in related to anemia. Now suppose you feel, now suppose take an assumptions that this ammonia restaurant want to open its outlet in the Sakchi. Now before establishing this company, okay, they will going to the higher authorities or executives, they will going to set for a meeting. And on this meeting, they plan, they prepare strategies, and on the basis of this particular strategies, they will going to analyze what are the processes and what are the drawbacks. First of all, they will going to think about the negative reviews or negative or ambiguous situations that will going to come while establishing this company. Okay, each and every particular will going to scan, and after scanning process they will going to monitor each and every point. Suppose छोटा सा outlet open किया, okay, उसके बाद after that what they will do, they will observe for near about 5 to 6 months or about a year. If they feel that this place is an ideal place for this restaurant to grow for a further longer period of time, then they will going to set up the business in a whole. Otherwise, after 6 months or 1 year, they will going to shift to another places. Okay, the process is called monitoring. ये process को monitoring process कहा जाता है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे big companies are there. Well, a lot of big companies are there. What they used to do, just to check whether the place is ideal for the business or not, what they used to do, they used to have a small outlets. Okay. They used to have a small outlet, and if they feel that this business will go to run for a longer period of time, then they will think for the biggers. Okay, then they will going to shift the whole. This process is called monitoring process. Okay, तो external environment में सबसे पहला points जो होता है वो है scanning, उसके बाद है monitoring. The third one is forecasting. The next step is for yes. Sir, I have a doubt. Sir, can you enlist the number of basically the factors which might affect external environmental scanning factors, and there may be various techniques that how we can do scanning of an external environment. And coming to the next point. Limitations. This is the next point you are asking. First of all, let me start. These are the next point I will go into. Okay, the next one is forecasting. The next step is for strategists to take the informations and data gathered during the scanning and monitoring phases and attempt to project forward. Forecasting represents the process where strategists develop feasible projections of what might happen, how quickly as a result they will going to have, what are the changes that are going to come, and through the scanning and monitoring process, they will going to forecast whether the business will run or not. For example, you can say the same example, the same way. Suppose ACC cement companies want to establish another want to open its another branch in suppose in Ghatshila sector or any other sector, which must be a hilly areas, and first of all they will going to what they will going to do, they will first of all check the environmental. After that they will going to check the locations, whether the products or the goods that going to be what you can say that are going to be export. Okay, so for that the ACC company needs transportation facilities. So for transportation facilities they need roads. Okay, so they will going to observe, first of all they will going to monitor or scan whether the roads the road is connected to the national highway. If you find the particular Lafarge ACC company cements, I'm talking about the big companies, okay, you will see one very much common things in between these companies. What we used to do, first of all, wherever they are going to open,
any or wherever they're going to establish another or reopen another companies. Okay. First of all, they will going to check the transportation facilities, the soil test, okay, the location. They will going to see the location because lot of means waste products, lot of environmental issues will be there establishing this cement company. So wherever the plantations will going to take place now, the plantation is always make sure that they will going to plantation the companies outside the city. Okay, that is why this big companies, if you've been towards Rourkela, if you've been towards Rourkela, you will going to see that the steel plants, lot of small scale industries that are there. While going towards Rourkela, from Tatanagar to Rourkela, you are going to see lot of large scale industries, manufacturing, automobile industries, and small scale industries, all have been outside the cities. That is Aditpur. That is why Aditpur is known as industrial belt. Okay, Aditpur is industrial belt. If you go through the history of Aditpur, you will see that in the 1990 or in 1999, if I am not wrong, if you just go and see the scenario of Aditpur, there is only a places where large, small, medium scale industries are there. Okay, no means what you can say, no city, no what you can say, what you can say. There is no means life was there, where a home, buildings, restaurant, okay, saloon, malls are there. Only industries and industries. Okay, but in due course of time, because the urgency, because of the atmosphere, because of this population, and because of this globalizations, the companies or the workers or the employees, they thought that why not we stay here and work to save the money. Okay, because in that particular era, in 1990s, I'm talking about 1999, the company is not paying any extra remunerations for living, for rent. Okay, but now, if you've been towards Rourkela and the particular area, that is industrial area, that is Aditpur phase 3, if you locate, lot of in between months, the industrial sector is been circled by lot of flats, buildings, houses, and all the governments, the owner of the flat, they put their flats on, they give their flat on rents to the employees working in the industrial sector. Why it's happening? And that is for that reason, there is an increase of population, there is an increase in the environmental degradation. Why? Because shedding the plants, okay, you need to construct the rent, you need to construct the building, you need to shed down the trees. Okay, so finally what happens? If you go towards this Aditpur phase 3 part, now, there is hardly you can count trees and all. Okay, only buildings, and in between the buildings, there are industries are there. And so much of population. In this means sunny season, in this hot, humid season, you will get, if you stay there for an hour, you will going to get fed. Such a hot and humid conditions, the people are staying over there. Why? Just to save small amount of money, because nowadays the companies or the bosses or the HR or executive, they are not paying any extra amount for the rent, for the charges of the building, for any development of the employees. Okay, but before that, these other facilities are there. So my point is, I'm distracted from the point just to make you understand. Forecasting means after scanning and monitoring, you need to analyze the points whether the business or whether the companies or industries which has been established here will going to run or not. Means future procrastinations, future predictions. Okay, these are the things. Now,
Look at the examples. There are few examples. What are these? Scanning and monitoring phases, attempt to projects, okay, representing the process, strategies development, okay, charges, changes, how the environmental is getting changes, how the soil is being getting transformed, what is the situations of that particular area, how quickly the environment or the industry it is getting adapted to the environment. This all comes under forecasting. Remember one thing, okay, you need to observe the following lines and you need to read each and everything in a line wise. Then only you can clarify or clear the meanings of this particular line. Okay, some grammatical errors are there in this particular, not in this particular, but in full text, lot of spellings, lot of grammatic, you can say the meanings are not coincidence with the other words. Okay, so you need to observe each and every points of them here. Then only you can identify the meaning of that particular points. Otherwise, it may be difficult for you to understand. Okay, the last point is assessing. Why assessing? What is the meaning of this assessing? Assessing represents the step in the external analysis process where all of the other steps come together. The objective of assessing is to determine the timing and significance of the effect of changes and trends in general environment on strategic management of a company. The object, what is the main objective assessing? Means evaluating. The assessing is to determine what you can say, the timing and the importance of the effect of changes and trends in the general environment on the strategic management. Okay, assessing or evaluating, the meaning of this, just to understand or just to observe the objectivity of the timing and importance of the effect that going to be taken place or the changes that is been taken place at the time of establishing any companies. Okay, now then after that, and you need to observe the environmental strategic processes of a company. Okay, what are the changes taking place, what are the trends that are going on, what are the customers that are coming. Okay, these all processes comes under assessing. Okay, for example, look at the example, toy makers, especially Hasbro and Mattel. These are the number one toy makers in the world, Hasbro and Mattel. Okay, they can make a toy of plastic of any kinds. The toys are of plastic, but the qualities, the qualities are so expensive that hardly you can purchase this kind of toys. They are preparing bikes, they are preparing small, what you can say, car, they are modifying the cars just for the kids, they are modifying the bikes, they are modifying the laptops, each and everything. Means highly, what you can say, precious, high pricing toys. Okay, Hasbro and Mattel. And retailing giants Walmart. You know Walmart? In Jamshedpur also there, Walmart is there. Yes, sir. And toys of our use are becoming more committed to selling their products, including toys, through electronic commerce. Look at the way. Before, now when we are the kids, our parents used to give a toy made of woods. Okay, I don't know about you, but my parents give me the toy of woods bus. There are buses are there from fair, from Mela. Whenever I used to visit to the Mela with my parents, they used to purchase a bus made of woods. Okay, they used to give me some plastic, small plastics, means whatever, toys and all. Okay, so we have these type of means collections when we are kids. But nowadays, the gadgets are so very expensive. The inclusions of artificial intelligence modify the use of toys among the kids. Now, electronic gadgets are there.
electronic gadgets are there. Means the toys are been so modified and it has been inculcated with artificial intelligence in so well, the blending of artificial intelligence and you can say the toys are so, and electronics make the kids more attract towards the toys. If you go to the shops, if you go to the fair, you will can see a lot of changes are there in toys also. Okay, so now what they used to say, products including toys. Now after, means from plastic to electronics, and from electronics the means incursions or attachment of artificial intelligence, okay, in the toys, they will going to see the effects among the kids, among the environment, among the children, whether they are accepting their toys or not. Okay, this is called assessing process. This is process is called assessing process. Assessing means evaluating the processes. Now your questions. I think I don't require to answer your questions from the question. So means monitoring, forecasting, assessing. I think your questions has been clear, but still, what is the questions I need to ask? Sir, I asked about what are the factors that basically affect environmental scanning, and there might be some limitations also, and how to deal with basically what are the techniques for scanning external environment. Your question is not, first of all, your question is not clear to me. So basically, my question is being subdivided into three parts. First of all, go with the first factor. What is the first factor? What is the first factor? पहला factor क्या है? क्या question है? पहला factor बताओ. Sir, what are the factors that might affect environmental scanning? What are the factors? बेसिकली जितने भी डेटा कलेक्शन, जैसे कि इसमें मेंशन है कि जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं वो एम्बिगुअस है, बेसिकली अनसर्टेन है. तो ऐसे कुछ तो फैक्टर्स होंगे ना जो मतलब हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर वो अफेक्ट कर रहा हो. सो ये पहला क्वेश्चन है मेरा. एंड दूसरा सर ये है कि नहीं, पहला क्वेश्चन में इफेक्ट कर रहा है तो आप क्या जानना चाहते हो? इफेक्ट कर रहा है फैक्टर्स बेसिकली किस तरह से हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है, वो फैक्टर्स क्या क्या है, किस बेसिस पे हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं. स्कैनिंग को. यस सर. स्कैनिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम एनवायरनमेंट को, फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट नहीं, यहाँ पर एनवायरनमेंट नाम यूज किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं कि नहीं. अगर हमको बिजनेस वहां सेटअप करना है तो सबसे पहले हमें स्कैन करके देखना पड़ेगा whether the environment is suitable, whether the soil is suitable. Environment means including soil also. तो एनवायरमेंटल सिचुएशंस जो है या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल जो है वो सूट करता है कि नहीं. अगर मैं यहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिश करूँ मुझे कोई दिक्कत होगा कि नहीं, ये सबसे पहला प्रायोरिटीज है. तो स्कैनिंग का कोई ऑब्जेक्टिव्स होता नहीं है. सबसे पहले एक्सटर्नल अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट आई नीड टू फॉलो. ओके, अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? स्कैनिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इफेक्ट क्या है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे. अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर स्कैनिंग कर रहे हैं टू सेटअप अ बिजनेस, इसका मतलब द पर्सन और द एग्जीक्यूटिव्स हु आर डूइंग स्कैनिंग just for the sake of the environment, it means they are friendly. They are very much friendly towards the environment, and whatever the companies they are going to set up, they will going to set or they will going to do according to the environment. Okay, first of all they are going to check the water clarity. First of all they will going to check the alkalinity of the water. First of all they will going to check the what you can say the pH value of the soil, whether my company suit this soil or not. If you are destroying the properties of the soil, then ultimately you are destroying the population or you are destroying the environment. Okay, that they will never ever going to do. The scanning comes under these are the important objectives. First of all they will going to check the environment, the locations, the atmosphere. After that they will going to check the pH value of the soil or alkalinity of the soil. They will going to check the water resources, whether the wastewater, where should I dump, and if I dump the wastewater, what will be the situations when the wastewater being dumped to the earth.
whether they will going to lose the alkalinity or not, or whether the pH value of that particular soil will going to increase or not. And if the pH value of that particular soil is going to increase, what will be the impact or what will be the repercussions that will going to come to the farmers or the people staying inside at that particular areas. So these are the processes that comes under scanning. Am I clear? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट. So basically, techniques क्या होगा environmental scanning का, environmental scanning analysis के लिए? टेक्निक्स स्कैनिंग मतलब स्कैनिंग के लिए environmental techniques क्या होगा? Yes sir. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो जितने भी आपने से कंपोनेंट्स मेंशन करे उसको कोई टेक्निक होगा बेसिकली एनालाइज करने के लिए. Lot of gadgets are there, lot of measurement equipments are there, lot of computer programmings are there, lot of electronics tools are there through which you can measure whether I am destroying the environment or whether I am doing good for my environment. Okay, so lot of things are there. Okay, lot of tools are there, and that particular the utilization of the proper tools in that particular areas or in the particular environment can going to make it can be scanned. One question is there. So what do you first of all I need to be clear with what do we mean by external environment in an organization? First of all, tell me what is internal and external environment. एक एग्जांपल सिंपल देता हूँ. आप अगर एक सिंपल सुन लो सबसे पहले इजी वे में समझो. अगर हम घर के अंदर में रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं उसे? इंटरनल. यस सिंपल सा एकदम बच्चों जैसा समझो. पहले सबसे पहले बच्चों जैसा समझो. अगर हम घर के अंदर रहते हैं तो वो इंटरनल हो गया. अगर हम बाहर जाते हैं तो वो एक्सटर्नल हो गया ना. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब जब घर के बाहर आप निकलते हो तो आपके एनवायरनमेंट पे आप किस किस के साथ जुड़ते हो पहले बताओ. ये चीज देखो अपने आप क्लियर हो जाएगा. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा. घर के अंदर में रहते हो, घर का एनवायरनमेंट मींस पंखा, बिजली, पानी, बल्ब, आपके फैमिलीज. दैट्स ऑल कंप्लीट. दिस इज अगर इसको हम इसको समझे इंटर स्फीयर, इसको ये इनर स्फीयर हो गया. इनर स्फीयर ऑफ योर हाउस यू आर गोइंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स ओनली. मींस पानी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, your comfort zone. I'm not going to detail about your comfort zone and your parents. That comes with this internal circle of your home. Now going outside means external. You are going outside means external. तो आप किसके साथ एक्सटर्नली जब होते हो आप किससे किससे जुड़ते हो पहले बताओ. Lot of peoples, unknown peoples. Yes okay? sir. Dust. Transportations. Maximum carbon dioxide, less oxygens. Okay, the conditions of the weather, sometimes sunny, sometimes hot, humid, sometimes winter, sometimes what you can say, sometimes rainy seasons. So these are the external factor. यहाँ external environment का मतलब ये नहीं है कि ओजोन लेयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये सब नहीं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सबसे इजी तरीका मतलब होता है आप एक्सटर्नली जिसके साथ आप अटैच हो रहे हो या कोऑर्डिनेट हो रहे हो उसका कितना इंपैक्ट गिर रहा है. मैंने पहले बताया जब आप एस्टैब्लिश कर रहे हो अपनी कंपनीज को तो फार्मर्स एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गिना जाता है. तो फार्मर्स को क्या इफेक्ट आप इंपैक्ट कर रहे हो. अगर आप सॉइल टेस्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. Okay, if you are using the water, suppose the water is clean, that is external. Now you are going to check the pH value or the alkalinity of the water. That will comes to the internal environment. So external environments means each and everything. The using of carbon dioxide, oxygen, what is the level of the oxygen, what is the level of the carbon dioxide. Now if you are going to check the oxygen level and carbon dioxide level or carbon monoxide level, that will going to be counted as an internal environment. That process comes under scanning process. ये पूरा प्रोसेस को स्कैनिंग करना मतलब क्या, एक एक चीज को बारीकी से उसे ऑब्जर्व करना. ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहरी दुनिया में आप अगर कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हो तो आप एक्सटर्नली जिससे कनेक्ट हो रहे हो उसमें क्या इंपैक्ट गिर रहा है. सपोज पानी, उसका क्या इंपैक्ट गिर रहा है.
इंसान, उसमें क्या इम्पैक्ट गिर रहा है, वेदर कंडीशन, उसमें आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हो। अब अगर इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो फिर वो इंटरनल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी को आप अगर एक्सटर्नली ऊपर से देखोगे तो नीट एंड क्लीन लग रहा है, लेकिन आप अगर उसे लैबोरेटरी भेजोगे, उसका टेस्टिंग करोगे, वो इंटरनली हो गया कि इंटरनली इतना इतना उसका मटेरियल्स हमें मिल रहा है, स्केल्स मिल रहा है, हमें यह डेटास मिल रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एम आई क्लियर राइट नाउ? यस सर। तो सर बेसिकली एक लाइन में बोले तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है मैन, मटेरियल एंड कैपिटल। नहीं, ये क्या गूगल से आंसर कर रहे हो क्या? नहीं सर, ये मैं बोल रही हूँ मैन, कहाँ से मटेरियल। सुने हो? These सर are किसी भी men, ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, men, material and कैपिटल जो capital, ये इंटरनल होता है। ये दिस किसी आर भी ऑल द, ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है। ये इंटरनल एक्सटर्नल इसमें कहाँ आ गया? दिस इज द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। You are utilizing the men, you are utilizing the finance, you are utilizing the capital. These all are the external things you are calculating. Now, internal कब होगा? जब इसका इस्तेमाल आप करोगे डिफरेंट वे में। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने मेन पावर लिए हो, आप मेन पावर को ईच एंड एवरी सेक्टर यू आर डिवाइडिंग, वो एक इंटरनल हो जाएगा। ध्यान से समझो इस चीज को, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग्स दैट मस्ट बी क्लियर। जो अगर हम बात करते हैं कैपिटल, तो कैपिटल की किस तरह से उसको इन्वेस्ट करना, तो वो एक पॉलिटिकल फैक्टर हो, सॉरी इकोनॉमिकल फैक्टर हो जाएगा। तो इकोनॉमिकल फैक्टर दो तरह से होता है, एक इंटरनल फैक्टर भी होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है। सबसे एक मिनट लो, अब सुनो ध्यान से, फिर से यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। अब छोटे उतने बड़े ये में सेक्टर में मत जाओ, सबसे पहले छोटे में आ जाओ। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले अपने तरीके से सोचो। सबसे पहले सपोज यू आर वर्किंग समवेयर एल्स, ओके, आपका एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जो सैलरी मिलता है आप उसे घर में लेके आए। तो घर से आपको जहां से मिला है सैलरी, वहां से घर तक लाने के लिए द प्रोसेस इज एक्सटर्नल प्रोसेस, ओके, बिकॉज आप 30 डेज आपने वर्किंग किए हो, आपका पंचिंग टाइम, पंच आउट टाइम एग्जैक्ट हुआ है, आपका थंबप्रिंट सही हुआ है, आप किसी भी दिन एब्सेंट नहीं हो, ईच एंड एवरी डे यू आर रेगुलर। जब कैलकुलेटेड होके आपको एक्युमुलेटेड वेल्थ और एक्युमुलेटेड फाइनेंस आप जब लाए हो अपने एक साथ, व्हाटएवर द सैलरी इज, वो एक्सटर्नल वे में आपके पास आ गया है। अब घर में आके उस सैलरीज को आप ईच एंड एवरी पार्ट आप उसे डिवाइड कर रहे हो, दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल प्रोसेस। क्यों? इंटरनल प्रोसेस जो होता है वो बाहर वाला जानता नहीं है, लेकिन आपका बाहर वाला जानता है कि आपको कितना सैलरी मिल रहा है। योर पेरेंट्स नो हाउ मच सैलरी यू आर गेटिंग, योर बॉसेस नोज हाउ मच सैलरी यू आर गेटिंग, एंड योर co-workers also know how much salary you are getting. So that is why the accumulation of that particular salary is not internal, that is external, because everybody knows. But coming to your house, how you are spending that particular salaries, how you have been divided those salaries into each and every part, that is internal. Am I clear? तो इकोनॉमिकल पार्ट, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो फाइनेंस का पार्ट है, जब वो कंपनीज उसे लेके आता है एज अ प्रॉफिट ला रहा है, अब उसका यूटिलाइजेशन जब कहां कहां करता है, वो क्या हमें लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव को पता चलता है कि सर ने यहाँ पर इतना खपत किया है, सर ने वहां पर इतना खपत किया है, वो इंटरनली हो गया है। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्लियर हुआ? ओके सर, हल्के से मत बोलो, अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर भी और क्वेश्चंस करो, आई एम रेडी टू आंसर। एनी मोर क्वेश्चंस दैट कमिंग टू योर माइंड? इट नीड टू बी क्लियर। मुझे भी अच्छा लगता है कोई ऐसा डाउट्स पूछता है, लेकिन ये डाउट खत्म होने के बाद फिर दोबारा जब रिपीट करना पड़ता है, देन आई गेट लिटिल बिट मेरा एनॉयड हो जाता हूं मैं। बताओ, पूछो। नहीं सर, याद तो क्लियर है। अरे यार क्या हो गया, मैंने सोचा और भी कुछ क्वेश्चंस होगा। वेरी गुड, यू आर गोइंग। एनी अदर क्वेश्चंस? सोचो सर। एक्चुअली हम जिस वे में सोच रहे थे वो एक्चुअली गलत था, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। बट अभी क्लियर है। कैसे नहीं, फिर तुम गलत कर रहे हो। Why you thinking of yourself in a negative way that you are wrong? No, you are wrong. You are not wrong. You are absolutely correct. But the process of thinking is wrong. आप जो प्रोसेस में सोच रहे हो that is wrong. मैंने ये एग्जांपल जब दिया, आप सोचो आपको सैलरी मिल रहा है, सबसे पहले सोचो आपको सैलरी मिल रहा है। अब बोला सर सैलरी में एक्सटर्नल इंटरनल का फर्क क्या होगा? मैं वो समझाता हूँ। एक्सटर्नल का फर्क, सैलरी का मतलब क्या होगा? आपका सैलरी कौन जानता है? आपके पेरेंट्स जानते हैं, अगर आप घर में बताते हो तो। आपके पेरेंट्स जानते हैं हाउ मच सैलरी यू आर गेटिंग? ध्यान से सोचो, सच्चाई से बताओ, सही है ना? आपके बॉसेस जानते हैं, आपके कॉलीग जानते हैं, तो वो इंटरनल कैसे हो गया है? वो एक्सटर्नल ही हुआ ना।
लेकिन आप उस सैलरी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कहां कहां उस सैलरी को, सपोज एक और एग्जांपल दो, उससे भी छोटा एग्जांपल मैं आ जाता हूं, देखो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। आज आपको 100 रुपया दिया गया है, ये जाओ मधुस्मिता गो टू द, आज दुकान जाओ, मार्केट जाओ और ये खरीद के लेके आओ, ठीक है। आपने क्या किया समझो बात को, आपके मम्मी ने आपको, आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज या 200 रुपीज दिया, आपको दिया, तो 200 रुपीज आप तक पहुंचने में किसका, किनके हाथ है, आपके पेरेंट्स के और आपके बीच में। मतलब क्या, वो जो मनी आपको दिया गया है दैट इज एक्सटर्नल, बट व्हाई, बिकॉज यू नो, योर पेरेंट्स नोज दैट यू हैव बीन गिवन 200 रुपीज बाय योर पेरेंट्स जस्ट टू परचेस सम, गो टू द मार्केट टू बाय समथिंग फॉर, ठीक है। अब आप मार्केट में जाके कितना आप मोल तोल करके, तोल मोल भाव करके आप ला रहे हो सामान घर में, और ऊपर से सेव करके 10 रुपया का गोलगप्पा ठूस के आ रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप और जो जहां से गोलगप्पा खाए हो और जिसको पेट किए हो वो जानते हैं। तो ये जो खाने वाला गोलगप्पा वाला है, जो पैसे बचा के आप खा रहे हो गोलगप्पा, ये आप तक सीमित है, मतलब सिर्फ आप ही जानते हो, ठीक है। आपसे अगर हिसाब मांगा जाएगा तो डेफिनेटली आप हिसाब दोगे। आपके पेरेंट्स को पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पेरेंट्स को पता है आलू 25 रुपया किलो, आपको 1 किलो लाने के लिए बोला था, वहां पर आपने 25 रुपया किलो दे दिया है। हो सकता है आप जिससे आलू खरीदते होंगे, आपने कहा कि सर एक काम कीजिए, आज 20 रुपया या 22 रुपए में मुझे आलू दे दीजिए, आपने दे दिया। तो वहां पर आपने सेविंग्स सोचो 5 रुपया या 4 रुपया सेविंग्स किया। यहां से करने के बाद आपने दूसरी दुकान में कुछ दूसरा सामान लिया, वहां पे आपने डिस्काउंट किया, ऐसे करते करते आपने 200 रुपीज में आपने 10 to 15 रुपीज अपने सेव कर लिया, और वो पैसा जो है वहां से आपने निकाल के साइड रख दिया कि मैं आज जाते वक्त गोलगप्पा, ये 15 रुपए का जो मैंने सेविंग्स किया है, जो सेविंग्स घर में पता है कि इतना इसको दिया हूं, इसमें से इतना लौटेगा, लेकिन आप उसमें से आपने 10 रुपया और बचा लिया, और उस 10 रुपया का आपने गोलगप्पा खा लिया। तो ये जो गोलगप्पा आपने खाया है 10 रुपया बचा के, दिस इज इंटरनल, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। पक्का पता चला? हाँ सर। तो जब भी कर, तो इस तरह से इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। एम आई क्लियर? एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। नो मीन्स 100% यू आर क्लियर एकदम? यस सर। हाँ सर। मतलब 1% का भी डाउट नहीं है ना? पक्का बताओ। नहीं सर, आगे बढ़ने के बाद अगर पीछे जाने बोलोगे तो फिर दिक्कत हो गया। लॉट ऑफ सिलेबस आई नीड टू कवर इट अप, ओके, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू बार बार कि अभी भी अगर वक्त है, देखो स्कैनिंग, असेसनिंग, सॉरी नॉट असेसनिंग, सॉरी असेसिंग, फोरकास्टिंग, इसमें से कोई भी ऐसा डाउट आपको आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। So no doubt. आई एम वेटिंग फॉर। अब एक बात बताइए, ये जितने भी क्वेश्चंस आप करते हो, ऐसा होता है सर आंसर दे पाते हैं कभी कभी? हाँ सर, क्लियर होता है डाउट। जब ऑब्वियस सा बात है कि सर मुझे डाउट रहता तो ही मैं क्वेश्चन करती हूँ, और बिकॉज योर डाउट्स क्लियर हो पाता तो मैं बार बार क्वेश्चन करते रहती हूँ। Your doubts are something very high-ended doubts. It's very difficult for some professors like us to clear your doubt because the doubts are really very tough. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा के निकल जाओ, रीडिंग मार के पढ़ा के निकल जाओ। थैंक यू, ओके। हाँ सर, क्योंकि रीडिंग अगर करना रहता तो वो मैं भी कर सकती हूँ, खुद से समझना अगर रहता, बट वो चीज नहीं हो सकता है ना। यही तो मैंने बात आपको बताया ना, that's why I'm telling you. So it's very tough the students like you to make you understand, because एक क्वेश्चन अगर एंड होता है तो उसमें से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। Very tough for professors, okay, to clear those doubts. ऐसे स्टूडेंट्स को डाउट क्लियर करना बहुत बहुत टफ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोफेसर्स को बहुत सारा स्टडीज होमवर्क करके आना पड़ता है, क्योंकि इस तरह का स्टूडेंट को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ओके। बट वेरी गुड, कीप इट अप, ऑलवेज आई वेलकम डाउट्स, क्योंकि डाउट अगर रहेगा तो मैं भी डाउट्स, बहुत सारा डाउट्स है तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा, ओके। दैट्स व्हाई डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। चलो, लेकिन बहुत सारे टीचर्स को ये प्रॉब्लम हो जाता है। डू यू नो दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ,
In fact, a major challenge. अच्छा, ये तो हो गया. Now come to the next segments of the general environment. Segments of the general environment. The general environment is made up of 5 segments. Okay. Number 1 is demographic. जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ line wise, आप underline करते जाइए. Yes. Short questions. The general environment is made up of 5 segments. Number 1 is demographic, economic, political, legal, social, cultural, and technological. The questions, short questions, may going to come for 1 marks. What are the 5 important segments in general environment? What are the 5 segments in general environment? What will be your answer? The answer is demographic, economic, political or legal, social culture, and technological. These are the 5 segments. The challenge is to scan all 5 segments of the general environment, focusing the primary effort on those elements in each every segment of the general environment that have the greatest potential impact on the company. Okay. Now, what are the challenges and what are the utilizations? The challenges is to scan. देखो, अब जो सवाल आ रहा है, तुमने पूछा था ना क्वेश्चंस कि सर क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है. पहला क्वेश्चंस क्या पूछा था? You have asked me one first question. What was the question you have asked me? So first question तो था कि factors क्या है जो affect Factors करते नहीं, हैं. objective. You have used the word objectives. क्या है? And दूसरा techniques किस तरह से हम लोग environmental scanning को कर सकते हैं. देखो, यहाँ पर आपका आंसर्स मिल गया है. डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल. ये आपका आंसर मिल गया है. Demographic, what is the meaning of demographic? Demographic means populations per square kilometers. How much human beings are residing in the per square kilometer? That can be called demographic, means related to populations, related to people. After that, economics means related to finance, related to accounts, related to money. And after that, political and social. Politicals means what will be the political pressures, because lot of political parties will going to put an obstacles establishing any companies. Okay, आप अगर कोई मोमो का छोटा सा स्टॉल आप चाहो, आप जाके साक्षी मार्केट में खोल सकते हो. If I request you, okay, please go there and open a small shop, quaint shop of momo. Go there. Lot about the publics, lot of what vendors are there. They will going to kill you. They will going to they will brutally they will going to beat you. What is the reason why you are here to open this quaint shop of momo? Did you taken the permission from us? You need to pay this much amount of money before inputting this particular things. So this is a pressure, and the same pressure is being put on the executives or the managements of those particular companies. That is political pressures. Okay. After that, social culturals, whether the social cultural people will going to accept here the companies or not. For example, you have heard about the nano. Yes. The Tata company is manufacturing the small car that is called nano. Nano means small, the car, but it has been what you can say, it has been completely destroyed by the political party, that is Trinamool Congress of West Bengal. Okay, this is the political pressures. This is the political pressure. Then comes to the next, technological factors. What are the technological things I require? Whether the technology availability of those technology can be easily be available to me. And technology is not only about the what do you call it, tools, AI, engineering and all. Technology also involved about the transportations. In the transportations, whether I am able to transport my or import my goods or not, these all
मींस को रिलेटेड विद दिस टेक्नोलॉजिकल फील्ड। तो वो जो पहला क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था, मैं भूल जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कैनिंग, व्हाट आई फॉरगॉट हियर। तो उसमें ये आपका ये इंपॉर्टेंट आएगा कि ये हम सर किस किस पैरामीटर्स में चेक करेंगे स्कैनिंग को, हम किस किस पैरामीटर्स पर स्कैनिंग करेंगे। तो दीज आर द पैरामीटर्स, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। इस पैरामीटर्स पर हम स्कैनिंग करेंगे। ये क्वेश्चन था शायद तुम्हारा कि सर हम स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव, ओहो यस आई एम, नाउ आई गॉट इट। सर स्कैनिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कैनिंग, मैंने पूछा था ना, यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। हाँ सर, ये पूछा था और ये भी पूछा कि लिमिटेशंस भी क्या है, मतलब कुछ तो पहले वाला क्वेश्चन पूछो ना, पहला क्या क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन था ना, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कैनिंग ऑर्गेनाइज, ऐसे कुछ था ना, किस तरह से बेसिकली कर सकते हैं हम लोग। तो these are the processes or these are the objective of the scannings, okay, and monitoring or assessing, ये तीनों मिला के ये इसमें आता है, डेमोग्राफिक, सोशल कल्चरल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल and also transportation. These are the 6 factors or these are the 6 objectives or these are the 6 areas, जो भी आप पकड़ लो, आप यहाँ पर इस तरह से ये काम करता है, स्कैनिंग करता है। अभी और क्लियर हो गया शायद तुम्हें? यस सर। The challenge is to scan all 5 segments of the general environment. Now underline it. Yes sir बोलने से नहीं होगा, just underline it, okay? Because this time the syllabus is so vast that hardly I get enough time to discuss the question and answer as I have done before. Okay, hardly enough I get time. Okay, lot of syllabus are there, lot of burdens on me, because after the completion of this paper I have to go with another paper. I have to, means already the paper has been assigned to me, I have to go with this marketing paper. Okay, so hardly I have get enough time to discuss all these things. Okay, as I have done earlier में मैंने question शायद तुम्हें लिखाया भी था। Yes sir, the communication paper, that one. Whatever you have doubts, I need you to write. Okay, so that it might be easier for you at the time of your examination. But now the process is, the circle is being changed or the process is being changed. The syllabus is so vast, hardly I get enough time to make you understand, give you any question answer or discuss anything else. So whenever as I am going with this, as I am going with the flow now, I just tell you to mark the lines, you just underline those lines. These are the lines which are very important. Okay, the first questions you got it? Yes sir. Now the next question, look at the next line. The challenge is to scan all 5 segments of the general environment, focusing the primary effect on those elements in each segment of the general environment that have the greatest potential impact on the company. Not to forget, an analysis of the general environment and its segment should recognize global elements that may have an impact on the company. यहाँ तक उतना जरूरत नहीं है because इसमें से कोई भी important points नहीं है. Come to the table 4.1. Some cultural, some social, cultural, demographic and environmental variables. What are the important variables? ये table point 4.1 में हम discuss करते हैं. For example, first one is social variables and the next one is culture variable. The social variable में पहला आ जाता है life expectancy rate. Next one is average level of education. Third है number of marriages, number of divorces, number of births. Now come to the next cultural variables: attitude towards the business, attitude towards the saving and investing, attitude towards the product quality and customers, services, trust and attitude towards government, attitudes towards racial equality and foreign. So these are the important variables in between social and cultural. Then buying habits, ethical concerns, attitude towards authority, attitudes towards work, career and retirement, attitudes towards the value placed on leisure time. So these are important variables which comes under social issues. These are some important points which comes under social issues.
क्लियर है? हो ही जाएगा रे भैया। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, कल फिर बात करवा दीजिए आप मेरे को, ठीक है? तो हम वो सब अच्छा, next is this table is very very important. Okay, what are the environmental variables? Right, just underline it. What are the environmental variables that we can comes under general environment, come under the segments of the general environment? What are the environmental variables which is come under the segments of general environment? This questions may going to come in this format. What are इससे पहले वाला, what are the social variables which comes under the general environment? What are the next है, what are the cultural variables which comes under the general segment of the environment? Next है, what are the demographic variables which comes under the general environment? The questions or will be going to come in this particular format. Okay? Yes sir. Remember, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, वेरिएबल्स किस किस पॉइंट्स पे हम लोग एनालाइज करते हैं? फर्स्ट, रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, ओजोन. Oh, someone is talking, Madhusmita. Please switch off the mic. I am getting disturbed. Yeah. Sorry, Ozone sir. depletion, ozone depletion, endangered species, government regulations, energy conservations, traffic congestions, inner city environment. So these are the following points we need to understand, we need to generalize, or we need to scan before establishing any company. Recycling the waste management, मैंने पहले आपको बताया था, air and water pollutions, pollution control, ozone depletions, endangered species, government regulations, energy conservations, traffic congestions, inner city environment. Now come to the next, demographic variables. What are the demographic variables which can be calculated under the segment of general environment? Number one is population changes by race, age, sex, and level of affluence. The next one is population changes by city, state, and country. The third one is regional changes in tastes and preferences. Number four, number of women and minority workers, number of college graduate students by geographic area. The sixth point is immigration and emigration rates. Look at the difference between immigration and emigration. Immigration, emigration. Do you know the difference between immigration and emigration? Yes sir. Okay. Locations of retailing, manufacturing, and service business, per capita income, average disposable income. So these are the following points. मुझे शायद तुम्हें यहाँ पर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, because it is very very easy. Demographic variables, कहाँ पर variables होता है, कहाँ पर points हम calculate करते हैं. तो इस कोई भी अगर कंपनीज को इस्टेब्लिश करना है तो ये चारों सेक्टर को हमें अच्छे से स्कैनिंग करना पड़ेगा, और उस चारों सेक्टर्स में ये 9 points, 10 points जो है, those are very important in each demographic variables. Am I clear? Yes sir. Okay, so let's conclude the class here. Tomorrow we will going to start the demographic segment, then comes to the next social culture segment and economic segment. Okay, page number 50, remember, we will going to start. Okay, any doubt? Yes sir. No sir. Lastly, I am asking you, any doubt? So far I have completed. Do you have any doubt? No sir. Every Doubts point. are cleared for today. Okay, every doubt is clear. You are satisfied with the doubts that have been that have been coming to your mind, and that I have been replied to you. Are you happy? Yes sir. Okay, चलो. Thank you. That's all for today's class. Thank you sir. हो सकता है इतना दिन हम नहीं सोचे थे, करना तो चाह रहे हैं ना मैडम, तो फिर वो सब बहुत जरूरी है, उसको निकाल लीजिए, और नहीं रहेगा तो निकालने का रास्ता हो जाएगा. किसका? अनुपमा फोन की थी मेरे को, ठीक है, उसका 14 तारीख को मिल जाएगा, कल आके वो डॉक्यूमेंट सब जमा कर देंगे. अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ. अनुपमा का एडमिशन हो चुका है.
वाले को भी बताइए समझिए, पैसा हम उससे धीरे धीरे ही लेंगे, वो आप बेफिक्र होकर रखिए, ठीक है। अब उसको ऐसा मैं कैसे कर बताइए ना, एंटिटी आपको पता है, हम आपको अपना बताएं, एंटिटी का हम लोग पहले बच्चे को 100 बच्चे हो बिल्कुल 100 को 200 400 जो दुनिया में सबके लिए है, हम ज़्यादा देंगे तो उससे थोड़ी उसमें होगा। मैं एंटिटी जो है ना, तो प्रॉब्लम है जो बेसिकली आगे में जाके दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हमारी मार्कशीट वगैरह प्रॉब्लम हो रहा है, समझे। कैसे मिसगाइड कीजिएगा मैडम, हम लोग तो खुद भी यहाँ पे कैंडिडेट को बोलते हैं एंटिटी का जो बच्चा आया है उसको हम तो कन्वर्ट करते हैं ना मैडम, उसको तो मैम गलत तो कब होगा, गलत तो तब होगा जब उससे हम लोग बेईमानी करके पैसा लेंगे, उसको तो सब बोल के ले रहे हैं, आगे उसकी मर्जी, हम तो सब बोल ही रहे हैं ना तुम्हारा ये रास्ता होगा, तुमको यहाँ से जाना होगा काकड़ी, हम उसको थोड़ी बोल रहे तुम बिष्णुपुर होते हुए करुआ घूमते हुए काकड़ी यही रास्ता है तुम्हारा, तो नहीं बोल रहे। अरे तो आप गलत कहाँ बोल रहे हैं मैडम, आप बताइए ना, गलत कुछ बोल रहे हैं इसमें, क्या गलत बोल रहे हैं बताइए। उसको तो हम बोल रहे हैं कि बाबू तुम्हारा ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तुमको कलिंगा एक ऑप्शंस दे रही है कि ऐसे डिप्लोमा का फीस है 1,90,000, अगर तुम डिप्लोमा करते हो, इसमें तुमको डिप्लोमा और बीटेक एक साथ, बीटेक का लैटरल एंट्री का फीस है 4 से 5,20,000 होता है, मेरे पता से तुम्हारा फीस हो गया 4,20,000 और इसमें से खाली 1 लाख एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपका हो गया 5, खत्म बात। सब तो जो फीस है वही तो उससे ले रहे हैं, एक्स्ट्रा उससे क्या ले रहे हैं हम, उससे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं, 5-20 तो हम लोग फीस बोलते ही है मैडम, ये तो डिस्काउंट रेट आपको हम दिए हैं, इसमें उसको सब हो जाएगा, बच्चे का कल का फ्यूचर बन जाएगा मैडम आपके हाथों में। पैसा देखिए अभी जो है ना इंसान कमा रहा है, हम कोई जाली सर्टिफिकेट तो उसको नहीं दे रहे हैं, गलत तो तब होगा जब उसको जाली चीज देंगे, उसके साथ धोखा करेंगे, उसको गलत बोल के उसको उसका पैसा ऐठेंगे, तब गलत होगा। यहाँ पे तो ईच एंड एवरीथिंग उसको बोल दे रहे हैं, बाबू तुमको इतना पैसा देना पड़ेगा, तुम्हारा इतना सिस्टम है, तुम वेबसाइट में देखो, तुम फीस देखो, सब कुछ देखो, हाँ तब उसको बोलेंगे ना मैडम, और बाकी आगे उसकी मर्जी करना है कि नहीं करना है, बट उसको तो बीटेक करना ही होगा ना मैडम, आप खुद बोलिए ना। हाँ एक दूसरा मिनट क्या है, वो कल आके मार्कशीट आपको जमा करेगी, तो 14 तारीख को उसको मार्कशीट आएगा, ठीक है, और दूसरा आप उसको कल करनी, तो हम कितने बजे आए बोलिए आपके घर, हाँ कितना बजे अच्छा सैटरडे, अच्छा ठीक है, तो सैटरडे ही रखते हैं, फिर सैटरडे ही आ जाएगा हम, ठीक है, सैटरडे ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन वो सोच ले, सैटरडे उसको बुला लीजिएगा, शाम में हम आ जाएंगे, फिर इसमें भी सारा कुछ उपलब्ध हो जाएगा। हाँ तो ठीक है फिर, वो फॉर्म तो हम आपकी के लिए लेके आए थे, हाँ तो ठीक है, तो परसों उसको बुला लीजिए, फिर बात कर लीजिए आप उसको, कल फोन करके बोल दीजिए परसों हम आएंगे, कल ये कर देंगे, बट हमको एक सुविधा आपको देना पड़ेगा, मेरा क्लास होगा उसका जगह हमको बना के देना पड़ेगा, खाली लैपटॉप को कनेक्ट करके जगह में रख के उसको फिक्स करना पड़ेगा।
अब देखिए कल मैम अगर आना चाहेंगे तो आइए फिर। हाँ तो आइए, आइए फिर जाके बात कर लेंगे क्या है उसका किंतु परंतु जो है अप्लाई कर लीजिएगा ना। हाँ तो सामने है, हम लोग चल जाएंगे एकदम, आप इधर ही आ जाइएगा, हम लोग चल जाएंगे और बात कर लेंगे। अगर बंदा नहीं रहेगा तो फिर आपको फिर माइग्रेशन शीट से आप निकालिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल मैम, उसको आपको निकालना ही होगा। और मेरे को माइग्रेशन शीट से अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, जब आपका रिजल्ट का टाइम होगा तब जरूरत है। तो इंद्राणी इतना दिन से दी नहीं है शीट से, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, हम चला ही रहे ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ तो हाँ ठीक है ना, हाँ बिल्कुल आइए मैडम, एकदम आ जाइए, सब कर दीजिए।